Hello students, welcome to my channel Rachana Jadav, and today we are going to discuss about the sample paper which is being released by the CBSE website. So you can see over here computer application code 165. So here we are going to discuss about it. तो यहाँ हम लोग स्टार्ट करते हैं तो पहले तो मैक्सिमम मार्क्स यू कैन सी दैट इज 50 और आपको टाइम मिलेगा 2 आवर्स एंड इन दैट देर आर 5 सेक्शंस आपको 5 सेक्शन मिलेंगे ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी सारे कंपलसरी है लेकिन इंटरनल चॉइस आपको मिलेगी दैट इज 30%. ओके सेक्शन ए हैज 12 क्वेश्चंस कैरिंग 1 मार्क ईच तो आपको 12 क्वेश्चंस मिलेंगे उसमें 1 मार्क ईच. देन यू हैव सेक्शन बी दैट इज 7 वेरी शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चंस दैट इज कैरिंग 2 मार्क्स. एक एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है. सेक्शन सी हैज 4 शॉर्ट आंसर्स दैट इज essay type questions and carrying 3 marks each. Then section D has one long answer, only one type question carrying 4 marks. In that also as it is being told that internal choice आपको मिलेगी तो आपको बीच बीच में एक एक क्वेश्चन में आपको शायद मिल सकता है कि ऑप्शंस मिल जाए. So let's see over there the sample paper so you will understand about it. Section E that is of two source based question या तो case based यानी आपको केस स्टडी दिया जाएगा एंड यू हैव टू सी दैट थिंग यू हैव टू रीड द पैसेज and you have to give the answer. So it is of 4 marks. So yes, you have to keep it in mind. You read it carefully, the passage or maybe the case study, you read it properly. So let's start. So first of all, section A, which is compulsory, and you can see all the questions are compulsory. So here it is like MCQs, you can say. First, it refers to gap between those who have access to technology and those who do not. तो ये इसके बीच का जो gap होता है, the gap which is in between of the technology, those who are knowing and those who are not knowing about it, so that is known as digital divide. Okay, which of these is an example of e-governance website? You must understand e-governance means government की sites आपको ढूंढनी है. So here it is given over here the answer. Which one of the following is not an e-commerce website? Diksha is not an e-commerce. Everyone know that is an educational website. Okay, you can say the portal also, educational portal. Next, which protocol is used to send an email over a network? So SMTP, Simple Mail Transfer Protocol. This all are of 1 marks. Please remember तो आपको अच्छे से answers उसके देने हैं. Choose the most appropriate statement for MMS. So here for MMS sending multimedia content. In that everything will come over there. So it is being said that multimedia. Collection of hyperlinked documents available on the internet is known as website. Everyone know website, right? So it is a collection of web pages, right? So that is also being said, and over here the hyperlinked documents. So it may be a different term which is being used over here. यहाँ अलग अलग term से उसे बोला जाता है. The HTML tag used to make the text italic. So for that, which tag? That is I tag. Okay. What type of CSS is the following code snippet? So here you have to see the code. Please ये code को अच्छे से समझो and afterwards you give the answer. So here it is in line. Which tag is used to provide the line break in HTML document? So that is BR. अगर आपको visible और invisible break के लिए बोला है तो आपको याद रखना है that when it is invisible break then BR and if it is visible break तो आपको HR use करना है. And if you want to know about the coding of HTML, then my videos are there related to HTML also because many of the people are facing the problems in the HTML coding और आपको questions भी उसके according ही पूछे जाते हैं तो please you can see watch the videos related to it. The attribute of the img tag used to specify the location of an image is src यानी जो image है उसका जो source है वो कहाँ से आएगा means the address of the image will be in the src attribute. Now here it is given question 11 and 12 are assertions and reasons. With that you have to select the most appropriate option. तो यहाँ first assertion दिया है HTML is a markup language. Reason, the HTML is used to structure or format text with the help of predefined tags. So here the answer is both assertion A and reason are true. दोनों ही एक दूसरे के साथ वो correct है. So R is the correct explanation of assertion. यानी जो assertion उन्होंने दिया है, जो sentence उन्होंने दिया है, उसके लिए reason सही है, right? So the reason is the correct. Next assertion in HTML tags written in lowercase letters or uppercase letters
are treated as the same. Reason, because HTML is a case sensitive language. So reason, and that here it is written assertion A is true. Assertion yeah, means the statement is true, but the reason which is given, that is not correct. It is not case sensitive, that is the reason. Okay, it is a case sensitive, not, it is not a case sensitive language. ओके नाउ सेक्शन बी फॉर 2 मार्क्स. तो आपको यहाँ दिख रहा होगा व्हाट इज ई लर्निंग, नेम एनी वन इंडियन ई लर्निंग वेबसाइट. प्लीज रिमेंबर ई लर्निंग, ई शॉपिंग, ई कॉमर्स, रिलेटेड टू दैट द क्वेश्चन विल कम ओवर देयर. ओके, तो आपको ये सारी चीजें प्लीज ध्यान में रखनी है एंड दैट चैप्टर इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. ओके, सो ई लर्निंग refers to the learning system that we can obtain through the internet using an electronic device, यानी electronic device के साथ. And for that the site is given over here. You can go with any of the e-learning websites. It is not necessary over here that only this one. Okay, write any two disadvantages of e-shopping, or you can write any two advantages of e-groups, as it is being told over there at the starting only कि आपको internal options आपको मिलेंगे. So first the disadvantage of e-shopping is lack of interaction, यानी आप वो चीज़ों को देख नहीं सकते हो, right? Personally you cannot see that thing. And delay in delivery, that no you know very well. अगर आप शॉप में जाते हो then you can get it directly from there. तुरंत ही आप लेकर उसे परचेज कर सकते हो. while over here it may take time. Maybe it may be not even in the stock. Okay, write any two advantages of e-groups. The e-groups का advantage, it helps in learning more. It increases your understanding of a subject or a lesson. It helps in generating more ideas about a topic. And आप अगर group में हो तो yes you can get the ideas, you can think about the topic very clearly with the group. What is a hypertext link? Give the name and the syntax of the HTML tag which is used for creating a hypertext link. So hyperlink, everyone know that it is the linking of the pages. So allows us to link HTML elements, that is text or image, to another document or another news section. Like you know that Wikipedia में जब आप देखते हो तो Wikipedia you must be seeing like only one website or one page only, जिसमें वो अलग अलग सेक्शन में जाकर आप जैसे ही क्लिक करोगे it will go to another section, but वो नए वेब पेज पे नहीं जाएगा. So that is called section link also within the current document. So here which tag you will use it, that is anchor tag आप use करोगे. With that href, like आपको मैंने बताया कि image के लिए अगर आपको address लिखना है, so what is the attribute src. So for the linking of the web pages or maybe the section link if you want to make it, the href का use होता है, that is hypertext reference. Okay, नेक्स्ट इफ यू वांट टू नो अबाउट द लिंकिंग, कैसे लिंकिंग कर सकते हैं हम लोग डिफरेंट टाइप के, then again as I have told you, you can watch my videos related to HTML also, which is given in the computer code 165 computer application का जो कोड है उसके प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा. Write any two differences between the proprietary and open source software, or here again the internal option you get it. Define e-commerce, as I have told you, मैंने आपको पहले ही बता दिया. ई शॉपिंग, ई कॉमर्स, ई लर्निंग, ई गवर्नेंस, उसके रिलेटेड आप पढ़ के ही रखना. नेम एनी टू इश्यूज रिलेटेड टू प्राइवेसी इन ई कॉमर्स. ओके, नाउ व्हाट इज प्रोप्राइटरी एंड व्हाट इज ओन सोर्स, ओपन सोर्स सॉरी. द सॉफ्टवेयर दैट इज ओन बाय इंडिविजुअल और कंपनी, यानी कंपनी की तरफ से होता है. जैसे एमएस ऑफिस आप ले लो तो उसके लिए लाइसेंस लगता है, वी हैव टू पे फॉर इट. सो दैट इज नोन एज प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर. ओके, व्हाई द ओपन सोर्स यानी उसका कोड आप चेंज कर सकते हैं. सॉफ्टवेयर दैट इज अवेलेबल फॉर एनीवन टू एक्सेस और चेंज द कोड. दोज आर नोइंग द प्रोग्रामिंग, प्लीज रिमेंबर, जिसको प्रोग्रामिंग आता है तो उसके लिए वो इजी हो जाता है इफ इट इज ओपन ऑफिस ओवर देयर. नेक्स्ट, ई कॉमर्स यानी क्या, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स और सर्विसेज ओवर द इंटरनेट इज नोन एज ई कॉमर्स. नाउ प्राइवेसी इश्यूज कौन से होते हैं, दैट इज फिशिंग एंड स्पैमिंग. ओके, एंड फिशिंग एंड स्पैमिंग उसके रिलेटेड भी आपको टर्म्स याद कर लेने हैं. ओके, द टर्म्स विच आर बीइंग यूज्ड फॉर द साइबर सिक्योरिटीज, साइबर क्राइम्स, तो वो सारी चीजों को आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है. यू हैव टू ऑल्सो सी द टर्म्स ऑफ इट. नेक्स्ट इज CSS is the most popular choice for the web developers these days. Write any four advantages. तो इसके advantages क्या है? It helps to make consistent and spontaneous changes in web pages. यानी आप अचानक से आपको कुछ change करना है, so you can do it very easily. It improves the loading speed of the page. यानी आपका पेज का स्पीड
जल्दी होगा instead of doing just by simple HTML. Your CSS, if you use it, then it will be easy and it will be also having a good speed. CSS has the ability to reposition the elements on web page. यानी आप उसकी placing change कर सकते हो. It has better device compatibility. So any of the device as we are using, उसमें आप कभी भी use कर सकते हैं and you can create your own web pages with the help of CSS. Write the difference between A-link and V-link. Write an HTML statement to illustrate the usage of the two attributes. Now A-link and V-link, please remember ये चीज आपको पूछी जाती है और मैंने कितनी बार देखा है that many of the people used to write the coding. तो ये आप anchor tag में नहीं use करेंगे, you will use it in the body tag. Body tag में ये attribute use होता है A-link and V-link. It is not used in the anchor tag. Please remember that thing. Or write the difference between DT and DD tag. So A link, that is active link, यानी आप actively जिसमें अभी work कर रहे हो, जो website पे आप work कर रहे हो, that is known as active link. Color appears while the mouse is clicking the link, यानी आपने link पर click कर दिया है तो वो active है. Visited link यानी already आप उसको visit कर चुके हो, right? So you must be seeing that blue color, that is for only link. A link for that by default it is red color, यानी आपने जिस लिंक पर क्लिक किया है तो वो रेड में हो जाएगा. एंड विच यू हैव विजिटेड, आप ऑलरेडी विजिट कर चुके हो, वो पर्पल में आपको दिखेगा. यू कैन चेंज द कलर, इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट मे बी द सेम कलर. ओके, now body link, in that the color name, see your body tag, again as I've told you कि body tag में वो आता है, not in anchor tag. Okay, so link, then the color name, v link and the color name, a link and the color name. By default वाला मैंने आपको बताया that is blue, red and purple, but yes you can change it over here. And you can see here it is written 0.5 marks for each definition, यानी दोनों के definition के लिए आपको 0.5 and 1 mark for the correct syntax, यानी ये syntax लिखने के लिए. It may happen that ऐसे ही आपको दूसरे भी syntax दिए जा सकते हैं, so you must know the coding very well. Okay, now the next option which is been given, DD and DT. DD tag is used to describe and term name in the description list, while DD is used for the junction with the DL, यानी DL के साथ हो जाएगा. And DT is a definition term, and this D is known as defines a description list. Inside a DD tag, you can put paragraphs, line breaks, images, links, list, etc. Okay, so remember this thing. Okay, ये अच्छे से आपको समझना है. And if it is asked the example, then you have to also write the example with that DL, फिर DT आएगा, फिर DD आएगा. ये आपको याद रखना है. Okay. Now, next is explain the concept of submit and reset buttons in the HTML forms. आप HTML के form बनाते हो, right? You can create with the help of the coding. तो submit और reset का use क्या है? So submit button allows the user to send the form data onwards for processing, यानी वो processing के लिए चला जाएगा. Reset allows the user to clear the form, यानी पूरी चीजें जो भी आपने लिखी है उसमें वो form में that will be cleared over there. Now section C, that is for 3 marks. Here plagiarism, first one, plagiarism is a major problem in the world nowadays. What do you mean by plagiarism? Write any 2 steps to avoid plagiarism. मैंने जैसे आपको बताया cyber security वाला, तो वो सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है. So you will remember the terms. Plagiarism, when you use another person's words or ideas, यानी किसी का word use करते हो, किसी के ideas use करते हो, लाइक किसी और का सॉफ्टवेयर यूज करते हो क्रैक वर्जन में, दैट इज पायरेटेड, आपको पता है. तो द सेम वे इज ओवर हियर. प्लेगरिज्म, दैट इज अनदर वर्ड्स और आइडियाज एंड ट्राई टू पास देम ऑफ एज योर ओन, यानी आप अपना खुद का समझ के उसे यूज करना शुरू कर देते हो, दैट इज नोन एज प्लेगरिज्म. 2 steps to avoid the plagiarism: properly quote and paraphrase and add your own example, यानी अपने खुद के एग्जाम्पल यूज करिए. ऑलवेज साइड द सोर्सेज, यानी उसको चेक कीजिए सोर्सेज को. Consider the URL. Now the next question, that www.shiksha.com, and answer the following questions. What does .com suggest? So .com suggests that the URL belongs to the commercial organization. यानी एक commercial organization है, एक business organization है. Which component identifies the type of protocol? तो यानी कौन सा protocol use किया जाता है? That is HTTPS. आपको यहाँ दिख रहा है HTTPS
First it was only HTTP, but now to make it secure, that there is being used HTTPS. Okay, what is the significance of S in HTTPS? It identifies that the website is secure for any type of transactions, especially online payment. When we are doing at that time, you have to see that HTTPS is being used over there. Write the equivalent inline CSS for the following HTML tag. यानी ये टैग के लिए आप inline कैसे लिखोगे वो आप बताइए. So body BG color is equal to green. IMG SRC is equal to me dot JPG height and width. So and with that again the internal option is given. So very good. Over here there is also a part of coding again. Write an external CSS code. See here it is given external. Remember inline and external is different over there. So code snippet to set all four margins of the body tag with 5 pixels each. Write an inline CSS code to set the background color for the first level heading as green containing the text my CA exam. Okay, so the answer here you can see body style is equal to background color green. You can see background color is an attribute and with that the value is green as it is being told over here. आपको ये simple HTML दिख रहा है and this is for the CSS. Okay, and that also with inline. Now the next one inline के लिए again तो यहाँ IMG with that you can see the sources me.jpg. Then the style you have to give, that is height. Style में क्या देना है आपको, height देना है, that is 20 pixels, and width you have to give it, that is 30 pixels. Okay, now we are having external code over here. तो external code में क्या हो रहा है, that you can see body is written before that, okay, for the tag, और यहाँ फिर उसके बाद curly brackets में लिखा जा रहा है उसका coding. So that is called external. Margin top, that is 5 pixels. Margin right from all the four sides as it is being told over there कि four margin, चारों margin के लिए हमें 5 pixels लेना है. So you can see margin left, margin bottom, okay. And then again inline it is given. Inline for what? कि हाँ heading level, first heading level के लिए. So H1 and then style is equal to background color green. And what will be written? The text उन्होंने दिया हुआ है कि text क्या लिखा होगा, my CA exam, and then you have to give the closing of the code. Okay, here you can see जब ये इसमें था external में तो यहाँ body tag को close नहीं दिया गया है. This is with the tag, तो इसीलिए inline दिया. Okay, now Mr. Amit is a new internet user. Okay, you being his friend suggest to him some tips which he should follow while using the internet. जब वो internet use करते हैं तभी क्या चीजें उनको ध्यान में रखनी है. He should use respectful language for all. ये तो जैसे आपको मैंने बताया था, सेट ऑफ रूल्स आर नोन एज प्रोटोकॉल फॉर द इंटरनेट. तो प्रोटोकॉल्स उनको फॉलो करने हैं. सो फर्स्ट प्रोटोकॉल इज दैट यू हैव टू यूज a respectful language. You cannot use harsh language over there, not even the flaming words over there. He should choose friends wisely and should not share his personal information with all. Especially social networking sites पे जब हम लोग यूज करते हैं तभी आपको याद रखना है कि personal information you have to not to share with anyone. He should neither send spam nor should encourage the same. यानी स्पैम मैसेजेस जो कहते हैं ना अनवांटेड मैसेजेस की तरह आपको किसी को सेंड नहीं करना है. नॉट इवन यू हैव टू एनकरेज द अदर्स कि हाँ भाई आप ये मैसेज भेजो ऐसा मेल में विद द मेल. स्पैम इज एन मेल, ओके, अनवांटेड मेल. Now we are going to section D, that is for 4 marks. Write the HTML code to design the web page as shown below. Consider the specifications that follow. You can write the code for any 4 specification out of the given 5 specification. नहीं, आप यहाँ ध्यान में रखना that when you do the coding, तो आपको क्या करना है, I will just give you the hint कि ये जो पेपर में आपको वेबसाइट दी है या वेब पेज दिया है, यू कैन सी द वेब पेज, तो उसमें जो 4 स्पेसिफिकेशन, सो यू मार्क इट कि फर्स्ट स्पेसिफिकेशन इधर आ रहा है, सेकंड इधर आ रहा है, थर्ड इधर आ रहा है, फोर्थ इधर आ रहा है. सो व्हाट यू विल डू व्हेन यू विल डू द कोडिंग, तो आपको इजीली वो कोडिंग में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. नहीं तो क्या होगा, एंड यू हैव टू राइट द होल कोडिंग, यू रिमेंबर दैट थिंग. आपको पूरी कोडिंग उसकी लिखनी है. देखो जैसे यहाँ दिया हुआ है, ओके, आई विल नॉट एक्सप्लेन इट बट अच्छे से आप देख लीजिए. फर्स्ट उन्होंने दिया HTML कोड स्ट्रक्चर शुड बी प्रॉपर, जिसमें ओपनिंग क्लोजिंग का भी ध्यान में रखना है, एंड इवन द टैग्स व्हिच आर यू आर यूजिंग लाइक लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड द पॉपुलर साइट शुड बी
सेकेंड लेवल ऑफ हेडिंग एट द सेंटर ऑफ द पेज। तो यहाँ आपको सेंटर ऑफ द पेज में आपको यूज करना है उसका। ओके, देन एंड द बैकग्राउंड कलर ऑफ द पेज शुड बी येलो, यानी ये येलो कलर का होना चाहिए। स्पेसिफिकेशन 2, तो आप स्पेसिफिकेशन 2 में जेपीईजी इमेज नेम नेशन, तो यहाँ देखिए ये जो दिख रहा है उसके लिए आपको क्या यूज करना है, तो यहाँ आप 2 लिख दीजिए। ओके, यू राइट इट ओवर हियर 2। Then the specification 3, the page should consist of nested list and the data as exactly given in the question. The outer list should be numbered list. जो outer list है वो numbered होना चाहिए और ये inner वाला आपको क्या मिलना चाहिए, unordered list, और उसमें भी ये square है और ये क्या है, circle. ओके, डिस्क नहीं है इसमें। नेक्स्ट स्पेसिफिकेशन 4, अगेन अगर आपको नहीं पता है हाउ टू डू द कोडिंग फॉर द लिस्ट, राइट, सो नेस्टेड लिस्ट के लिए भी या फिर नंबर्ड या फिर अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए, देन यू कैन गो टू माय चैनल। द इनर लिस्ट एज गिवन शुड बी अ सिंबल बेस्ड, तो सिंबल बेस्ड, एंड एज आई टोल्ड यू वहाँ 3 चीजें ही है, स्क्वायर, सर्कल एंड डिस्क। तो बाय डिफॉल्ट में तो डिस्क आता है, लेकिन हमारे पास क्या है, स्क्वायर एंड सर्कल। Okay, next is give a sorry, fifth one, feedback should be the email link, तो email की लिंक होनी चाहिए। तो यहाँ आपको दिख रहा है give ahref mail to is the main over here, after that your mail address will be started and then the closing, and then you will write a text, जिसके टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो वो लिंक ओपन हो जाएगी, दैट इज ऑफ ईमेल। okay, and body tag and HTML, right, so each specification carries 1 mark, तो आपको देख लेना है, और में भी आपको HTML का ही कोडिंग दिया हुआ है, so please see that one also। यहाँ स्पेसिफिकेशन दिया है, here it is given a table, तो टेबल की भी प्रैक्टिस अगर आपको करनी है तो आप कर लीजिए अच्छे से, and if you don't know, as I've told you, you can watch my videos related to it, you can go to my playlist। तो यहाँ I will slowly I will go, and if you don't know how to download it, अगर आपको डाउनलोड करना नहीं पता है कि हाँ ये सैम्पल पेपर कैसे डाउनलोड करना है, then yesterday only I have made one video that is related to how to get the sample paper, how to download it, उसकी आंसर की और उसके साथ उसकी मार्किंग स्कीम भी आती है, तो वो भी आप ले सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। Now this is section E, that is the case study। So you have to observe the table, यहाँ क्या दिया हुआ है, observe table and then you have to give the answer। तो आप ये टेबल को ऑब्जर्व करेंगे and then you will give the answer। तो यहाँ देख लीजिए, इसके साथ कोडिंग दिया हुआ है, कोडिंग में बीच में आपको फिलअप्स जैसा दिया है, यू हैव टू फिल दिस पार्ट। ओके, तो ये फिल करने के लिए आंसर्स यहाँ दिया हुआ है, देखो, राइट द एट्रीब्यूट वैल्यू टू कंप्लीट द स्टेटमेंट 1। तो स्टेटमेंट 1 को कंप्लीट करने के लिए आपको क्या देना है इधर, राइट, सो व्हाट इज द आंसर, दैट इज बॉर्डर। ओके, तो बॉर्डर देंगे तो टेबल बन जाएगा। नेक्स्ट इज आफ्टर दैट, यहाँ ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों टैग आपको देने हैं, लेकिन किसके देने हैं, सो यर राइट द सुटेबल ऑप्शन फॉर द ब्लैंक्स गिवन इन द स्टेटमेंट 2। तो यहाँ क्या है, कैप्शन के साथ, here it is given। okay, so yes, you have to give the caption tag opening and closing, तो ही वो आएगा ना इधर। caption is for the heading of the table, ये दिख रहा है आपको, heading दिख रहा है, so this heading is being given with the caption tag, लेकिन वो टेबल के बाद आता है, not before the table। okay, now statement 3, that is td then dash is equal to 2, तो क्या आएगा, that is row span। row span means what, to merge the, over there the rows। आप यहाँ देखिए, ये इधर मर्ज किया गया है, राइट, सो यू कैन सी इट ओवर हियर। ओके, नेक्स्ट इज आफ्टर दैट अबाउट ओवर हियर, तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि टीडी लाइट के बाद दिया हुआ है, सो हियर यू कैन सी, सो व्हाट इज दैट, द कॉलम्स आर बीइंग मर्ज, तो कॉलम मर्ज किए गए, तो आपको क्या करना है, कॉल स्पैन। ओके, so your call span will be added over here, and then lastly it is given what will be the complete sequence of the closing the above HTML document। तो आपको यहाँ closing में क्या क्या चीजें देनी है, तो पहले तो table देना है, because table is completed, तो table tag closing, then body tag closing, and then the HTML closing। now the last but not the least, that is about the case study। तो आपको ये पैराग्राफ को रीड करना है, प्लीज रीड इट प्रॉपरली
and afterwards you have to give the answer. So identify the type of cyber crime Parminder is a victim of. तो वो cyber bullying. Okay, as I have told you, cyber security बहुत matter करता है, cyber ethics बहुत matter करता है. So you read the chapter and the terms. After hearing about his ordeal, the school decides to publish a set of moral principles that determines the appropriate behavior of the students while using the internet. The school is referring to cyber ethics. Write a safety measure to be taken by Parminder to avoid threats from unknown people in the future. So lock his profile and only let his friends view this profile. Any other valid safety measure also you can use it. अगर आप कोई और भी जानते हैं तो आप वो बता सकते हो. Next, Parminder decides to make a list of common safety precautions to be taken when online. Write any 2 points that Parminder should include in his list. Use strong password, log out of the social media accounts, and any other also you can take it the point. Okay, and half of mark each is getting. So here it will be for 1 mark. Next, after that, why are privacy settings so important in the social networking sites? Yes, privacy settings may be used by the user to adjust the visibility of the profile. यानी कितने लोग देख सकते हैं, नहीं देख सकते, because you have seen that now on the social networking sites, many of the people are posting many of the things और वो कोई भी access कर लेता है, तो then it is not good for us. Okay, so their intention is not good over there, and so here the chapter is finished, and of means chapter means the paper. And if you don't know anything about it and you are having any query, you can give the comment to me. आप लोग comment कर सकते हो. So all the best to you all, and I think so the exams are going on. Many of the people have completed the exams also. So all the best, and you can watch my video and please share it to the people those who are in need. Thank you.